और आपका आज की वीडियो। आज की वीडियो हम लेकर आए, उसका टाइटल है व्हाई साउथ इंडिया स्ट्रीट फूड डिस्ट्रॉयज नॉर्थ इंडियन फूड। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो, लेकिन से पहले वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर को फॉलो करें चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल के इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। In this video, I'll be showing you 5 reasons why South Indian food absolutely destroys North Indian food. But first, let's back up. For those of you not living in India, you may be surprised to know that North Indian food is quite different from South Indian food. What? South Indian food is considered to be one of the most well-recognized cuisines around the world. Renowned for its crispy dosas, coconut-infused curries, and an abundance of rice-based dishes. It's coming out of this giant rice cooker that would make any Asian lady in Korea jealous. But how have these flavors shaped the cuisine in Chennai, the capital of Tamil Nadu, in the southernmost state of India? Well, today, we're gonna find out. From a pancake bursting with savory curry goodness, challenging the best of any Waffle House menu. Iconic dish here. All the way to a biryani factory, churning out 15,000 pounds of rice every day. Every day normally 5,000 to 7,000 kgs of biryani. Particularly in Sundays we are making 10,000 to 12,000 kgs. So get ready because we're taking a tour of the most iconic South Indian treasures from Chennai. We begin our journey with Chennai's favorite cheap breakfast dish, a donut that's stolen the hearts of Tamil Nadu's locals since its creation in 1951. மெதுவடை வந்து எங்களுடைய ஹோட்டல்ல நல்ல மூவிங் ஆகிற மெதுவடை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எதுக்காக சொல்றோம்னா மேலே மொறுமொறுப்பாகவும் உள்ள சாப்பிட்டா ஹெல்த்தி ஃபுட் அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா ये तो वैसे नहीं लग रहा। हमने मेदुवड़ा तो नहीं खाया था। मैं लग रहा है தேங்காய் சட்னி, கார சட்னி, சாம்பார் இப்படி வச்சு 3 வகையா டோனட் வந்து மைதால செய்வாங்க. இந்த சவுத் இந்தியன் டோனட் வந்து கோல்தால் அதாவது உளுந்துல செய்றாங்க. हां उड़द दाल ये ग्राइंड हो रही है। हां Introducing Medu Vada. This famous South Indian breakfast is crafted using one of India's most highly prized and expensive legumes, the legume known as black gram, exclusively grown in the southern part of India and also northern Bangladesh and Nepal. But that is it, and it is very exclusive. To make this dish, start by blending the black gram soaked overnight into a thick batter. Overnight. Next, add our 7-spice ensemble: black pepper, cumin, aromatic curry leaves, zesty green chilies, red onions, a dash of salt, and a hint of pepper root. Mix everything well. Then take a blob of batter and with a little thumb magic, sculpt it into a donut shape before dropping it into the fryer. This trick ensures our donuts cook up evenly, giving you that perfect crunch from the outside to the inside. Once they are perfectly golden brown, take them out and serve. Unlike its sugary cousin, this savory donut brings all the heat. It's a flavor journey, a pilgrimage of pleasure, where legumes and spices collide into a spicy tango, unleashing a pepper and curry explosion. And in the texture department, it's a tag team effort, a crispy coat embracing a fluffy cloud-like center. Fun fact, Medu means soft, while vada is a type of Indian savory fritter. 60 Now, introducing an irresistible sweet sensation that steals the spotlight at every public holiday or wedding in Chennai. Get ready for a sugar rush because this egg-based delight is not holding back. I'm not kidding. It packs a whopping 10 pounds of sugar. When will you guys believe me? This thing is gonna be very, very sweet. Let's take a look. एक्चुअली मुट्ठे मिठाई बोलते हैं कि मुट्ठा मीन्स आके तमिल में एग बोलते हैं एंड मिठाई बोलने का मतलब कि उर्दू में जो बोलते हैं मिठाई, सो मुट्ठे मिठाई एक स्वीट बोलते हैं इसे कॉमनली। वो टेस्ट बहुत अच्छा लगा मुझे। बाद में खाने में मुझे दिल में लगा कि यही बिजनेस क्यों करूं। बाद में ये कॉन्सेप्ट उठा के मैं बिजनेस चालू किया, उसका नाम जो है सलीम स्वीट्स। Behold the Matta Mithai. This recipe emerged just over 6 decades ago, casting a spell on the taste buds of Tamil Nadu ever since. Now it's the star dessert at almost every local event. First things first, crack a couple dozen eggs into a bowl. Yes, I said dozen. Many dozens.
Next, the koya. It's a thick dairy ingredient, somewhat similar to dry ricotta cheese, made from dried whole milk or whole milk thickened on an iron pan. Carefully fold that into the egg. Follow that with all the sugar you can find at Indian Costco. Here, it was more than 10 pounds. While folding, add the magical ingredient. No, not more sugar. I'm talking about ghee, also known as clarified butter. Now place it over a gas stove and using a hand blender, mix everything well until it gains a custard-like texture. For the final step, glaze up a tray with a bit of ghee and pour in our eggy mixture. Bake everything for 6 hours and serve. Imagine a smoky, creamy egg custard with a seriously sugary kick. Blame it on the ghee or the irresponsible volume of sugar. But despite its simplicity, this treat is bursting with rich, intricate flavors that'll leave you craving for more. Chennai, a massive coastal hotspot in India. It boasts a cuisine that's heavily influenced by its oceanic surroundings. Seafood reigns supreme here, served up in countless delicious ways. But the seafood that's topping the charts, the legendary fish fry. Seriously, it's everywhere. Say hello to the pomfret fish fry, known locally as Vaval Meen Baruval. This spicy, shallow-fried delight has that magical power to turn everyone into a die-hard seafood enthusiast. Even that one cousin with a seafood allergy would give it all up to try this. You'll see why as we get to the cooking lady's secret steps. First, she carefully washes the pomfret fish, then scores its entire body using the traditional boti knife. Next up, the spice game begins. She adds salt, turmeric powder, red chili powder, and fenugreek powder. You probably thought she was done. Well, you thought wrong. After a few splashes of water, she adds a blend of ginger, turmeric, and fish masala. Mix it up for those flavors to mingle and work their magic. Finally, it's frying time. 15 to 20 minutes till it's crispy to the bone. This dish, it's the epitome of comfort food in Tamil Nadu, the pomfret fish. White, flaky, and oh so tender. After a solid 20 minutes in that oil, it's crispy on the outside and fall off the bone soft on the inside. Simple, yet delicious. And now, your cousin with a seafood allergy is dead. Get ready to dive into the ultimate dosa experience. We're talking a dosa stuffed to the brim with juicy mutton curry, an egg surprise, and all of it topped with even more spiced, drenched mutton. This, my friends, could very well be the heavyweight champion of meaty dosas. Simmakal Konar Kadai is a restaurant which is originated in Madurai in a place called Simmakal around 1943. After 20 years of time, 1963 around Curry Dosa specific dish has been invented. It is invented by Mr. Manikam Konar. His father, Mr. Sundram Konar, founded Konar Kadai. So from then almost 8 years it has been here. From that time it has started the story of Curry Dosa. Let's dive into Chennai's culinary wonders, dosas and curries. But why settle for one or the other when there's a dish that masters both? Meet the mutton curry dosa, one of the city's most magical food creations. Tell me the fuzzy resume. Step 1. Spread that dosa batter on the hot tawa. Step 2. Top it with a dose of rich mutton brain gravy. Step 3. Crack an egg right on top and mix it all together to create a fatal 15-car pileup of flavor in your mouth. Step 4. Enter the star ingredient, mutton sukka. If it came from a cow, we would call it brisket. But this is intensely seasoned chest meat that's been cooked low and slow. Flip it, let that meat caramelize, and you've got yourself a dosa fit for royalty. This dish is experienced in layers. First, a crispy, nearly violently seasoned mutton meat kicking off the flavor parade, followed by a creamy curry mixed with egg at the heart of it all. And to seal the deal, the final layer, a warm, slightly crispy dosa batter that ties everything together.
Before we put an end to this onslaught of South India's culinary excellence, let's shine a spotlight on the ingredient reigning supreme, not just here, but across all of India. I'm talking about rice, basmati rice. And if there's a dish that's the ultimate rice ambassador, it's biryani. For our final escapade, we're making a pit stop at a biryani factory where they're churning out a mind-blowing 11 to 15,000 pounds of biryani each day. That's almost enough biryani to feed your mom. Our biryani style is Chennai style Muslim wedding biryani. Biryani was popular by Muslims because they only brought it to the Tamil customs by the wedding biryani. They know about the cooking timing and dum biryani. That is only the specialty. So Muslims are using mostly dum biryani. That is a fine quality biryani compared with any other style. Dum biryani is most favorable for all the people. Our biryani is not so spicy compared with other biryanis, and our biryani is easily digestible. Biryani is probably one of the first dishes that comes to mind when you mention Indian cuisine. But did you know there are over 70 different varieties of biryani? Here they make it in the dum style. And that is dum spelled D-U-M. This style originated from the Arabic Peninsula, and it's more similar to a plow than other classic biryanis. Instead of layering in the ingredients as usual, they mix everything together in a huge pot. Start by frying up red onions with ghee in a giant cauldron. Once they're golden, add ginger garlic paste and diced tomatoes. For seasoning, add salt, turmeric powder, and red chili powder. Now it's time for the protein. Here, they like to wash the chicken thighs, season them with turmeric powder, then drop them in the main cauldron, followed by water and fresh coriander leaves. Finally, add the par-cooked rice and let it boil for another 45 minutes to complete the dish. नहीं वैसे इन्होंने डायरेक्ट चावल डाल दिए ना हम लोग अलग When से the boil cooking भी is करते हैं finally complete and the lid is removed, you'll be greeted by something glorious. Despite its colossal production, this biryani is on a whole different level. Every grain of rice is infused with those aromatic spices, making each bite an absolutely blissful experience. दम बिरयानी 280 रुपए की प्लेट होगी या किलो होगी वो होगी वो जो दिखा रहे थे. Now that we've gone through the most iconic dishes in Chennai, showing off the amazing variety South India has to offer, it's time for us to pick our favorite. Was it the crispy medu vada, the eggy mutton mithai, the flavor-packed mutton curry dosa, the legendary fish fry, or the mouth-watering biryani? मैं बिरयानी मैं दो चीज़ Today, the biryani stole the show for me. The mastery of crafting such delectable food on a grand scale and then serving thousands with affordable, high-quality dishes, well, that is just plain old worthy of my respect. So how about you? Which one of these Chennai classics would you try for yourself? Let me know downstairs in the comments below. And for more indulgent feasts for your senses, be sure to subscribe to Best Ever Food India. Thanks. Bye. भाई ये तो हमें मालूम है नॉर्थ इंडिया का फूड का टेस्ट और साउथ इंडिया का फूड का टेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, लेकिन आज की हम डिशेस की बात करें ना तो भाई वो मेदू वड़ा हमें लगता है कि हम जो वहाँ पे वड़ा वड़ा कह के खाते रहे ना वो मेदू वड़ा ही था. कहाँ पर? मलेशिया में. हाँ मुझे भी लग रहा है ये है ना क्योंकि उड़द दाल का बना हुआ है ना. हाँ. तो मुझे भी लग रहा है कि हम लोगों ने मेदू वड़ा ही खाया था और मुझे बहुत मज़े का लगा था. इनफैक्ट आज जितनी भी हम लोगों ने डिशेस देखी मुझे ऐसा लगता है कि मेदू वड़ा जो है वो मैं बिरयानी के साथ बहुत इंजॉय करके खा सकती हूँ. हर बंदे का अपना अपना ऑब्वियसली एक वो कॉम्बिनेशन रहता है. जैसे मुझे बिरयानी के साथ फ्राइज भी अच्छे लगते हैं और साथ एक ठंडी ठंडी कोक यार अच्छी तो लगती है लेकिन अब सर्दियों में मैं नहीं पी सकती. साउथ वाली साइड पे तो नहीं सर्दी इतनी पड़ती हाँ, ना. गर्मी में कोक से लेकिन फिर भी यही कह सकते हैं कि कोक से थोड़ी जान छुड़ानी चाहिए. हम लोग तो बहुत ज्यादा पीते थे. चले साथ ठंडी ठंडी बोतल सही है. हाँ बस सही है लेकिन हाँ कभी कभी चल जाता है. लेकिन हर एनीवे मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर मैं बात करूँ ना कि नॉर्थ इंडियन फूड और जो कि मतलब अगर हम लोग दिल्ली वाली साइड की खाने की बात करते हैं और मैं साउथ इंडियन फूड की बात करती हूँ, वैसे तो इंडिया के हर स्टेट का खाना बहुत डिफरेंट रहता है. बट आई डोंट नो पर्सनली मुझे लगता है कि ना आपको साउथ इंडियन फूड में एक बहुत ज़्यादा टेस्ट वैरायटी ऑप्शंस और आप कह लो कि हमारे जैसे लोग जिनको खाने पीने का नहीं आइडिया
और तो आपको बड़े एक्सपेरिमेंटल फूड जो है ना आपके सामने नजर आते हैं। वैसे मैं अगर देखूँ ना तो भाई जितने भी राज्य हैं इंडिया के, आपको डिफरेंट आपको वहाँ पे फ्लेवर्स और डिफरेंट फूड्स जो है वो नज़र आते हैं। साउथ में हम ज़रा क्या नाम लेते, पूरा सारा इकट्ठे, यानी कि केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सबको एक साथ ही जो है ना हम काउंट जो है वो कर लेते हैं। तो उस वजह से मुझे लगता है कि हमें जो है ना वहाँ पे काफ़ी एक जो है ना मिक्स जो है वो नज़र आती है। मुझे लगता है एक ह्यूज मेन्यू है वहाँ पर। नॉर्थ वाली साइड पे जब हम आते हैं, हम फिर राजस्थान, यूपी, सारे ओडिशा वगैरह ये सारे अलग अलग करके देखते हैं, तो उस वजह से हमें लगता है कि थोड़ी कम वैरायटी है। तुम ये देखो, अगर तुम दिल्ली की बात करो तो दिल्ली में तुम्हें ज्यादातर नजर आएगा। यार दिल्ली तो एक छोटी यानी कि शहर है, लेकिन अगर दिल्ली से जैसे आप बाहर निकलते हैं, ठीक है, जैसे आप यूपी देख लें, आप हरियाणा देख लें, पंजाब देख लें, राजस्थान, गुजरात। हरियाणा वाली साइड पे तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? कुछ ना कुछ तो भाई साग वगैरह होगा। होगा, बिल्कुल ठीक होगा। है ना, मतलब स्पेशलिटी की अगर बात करूं, साग हम लोग भी खाते हैं। लिट्टी चोखा भी तो होता है लिट्टी चोखा मेरे हाल में राजस्थान वाली साइड पर होता है, और मे भी शायद बिहार में भी मिलता है, लेकिन बिहार की एक और भी वो खासियत है, वो जो हम लोगों ने लास्ट टाइम पर देखी थी। नहीं, कहने का मतलब है कि अगर हम ज्वाइन करके देखें ना, तो जैसे हमें एक वसी मेन्यू जो है, यानी कि एक बहुत बड़ा मेन्यू हमें साउथ की तरफ देखने को मिलता है ना, उसी तरह एक बहुत बड़ा मेन्यू हमें जो है नॉर्थ की तरफ भी जो है वो देखने को मिले। हमेशा जिस वजह से डिफरेंट जो है वो नहीं लगता यहाँ का मेन्यू। इनके पंजाब, हरियाणा बात करें, राजस्थान की बात करें, तो बहुत सारी चीजें जो है ना मिली जुलती हैं, क्योंकि बॉर्डर एरियाज हैं तो वो शेयर होता रहता है कल्चर। और साउथ जरा दूर है तो वहाँ की डिशेस थोड़ी डिफरेंट है, तो इस वजह से जो है ना वो लगता है कि यार वो जो है ना बहुत आपको एक बहुत बड़ा कलेक्शन जो है वो देखने को मिला है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, वाकई है। पता नहीं, स्टिल मैं फील करती हूँ कि साउथ का जो आपको डाइनिंग है वो काफी डिफरेंट ऑप्शंस नजर आते हैं, और काफी ज्यादा बड़ा है। क्योंकि जब हम लोग सिंगापुर में थे और हम लोगों ने ये साउथ इंडियन फूड खाया था, तो जिस तरीके का करेला वहां पर बनाया गया था, एक तो कड़वा भी नहीं था और इतना टेस्टी। मैंने फ्राई किया हुआ करेला, मैंने अपनी जिंदगी में, पूरी जिंदगी में ऐसा करेला नहीं खाया था। और अगर तुम्हें याद हो भिंडी भी वो फ्राई की हुई थी ना, कुछ मसाला टाइप कुछ लगा हुआ था, तो मुझे तो भाई बहुत भिंडी भाई प्याज वाली बस अच्छी होती है, जो हमारे घर में बनती है ना। मुझे उस तरह की भिंडी जो है ना अच्छी लगती है, क्योंकि एक शोरबे वाली भिंडी भी देखी हुई है, उसे देख ना दिल को कुछ होने लगता है कि यार ये क्या, क्योंकि उसमें ना भिंडी पर तैर रही होती है। याद है जब हम लोग 2018 में उम्रा करने गए थे, याद है? तो उस टाइम पर ना हम लोग एक इंडियन रेस्टोरेंट में गए थे, और वहां पर उनसे मतलब हमें बड़ी भूख लगी हुई थी, तो हमने ना मतलब इंडियन रेस्टोरेंट में चले गए। तो हम लोगों ने जब वहां पर खाना मंगवाया ना, तो मुझे याद है, या तो भिंडी वहां पर हम लोगों ने वो काउंटर में देखी थी, हमने मंगवाई नहीं थी। हमारा सामना हुआ था कि भाई भिंडी ऐसे भी होती है, एंड वी वर लाइक नहीं, हमने नहीं खानी। तो उनसे हमने पूछा भी था कि यार ये भिंडी आपने इस तरह की क्यों बनाई है, ये शोरबे वाली यानी कि क्यों है? वो कहते यहाँ पर जो है ना इस तरह की भिंडी जो है वो ज्यादा जो है वो सेल होती थी। बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो हम ये समझे थे तब कि शायद अरबी लोग जो है ना वो तैरती भिंडी जो है ना वो शायद जो है वो खाते हैं। नहीं, लेकिन हर जगह पर अपनी अपनी पसंद होती है। यार देखें ना, देखें आप किसी और कंट्री में, जैसे मैं पाकिस्तान उठकर जो है किसी और कंट्री में जा रहा हूँ, ठीक है ना, तो वहाँ पे जो फूड तैयार हो रहा होगा वहाँ के लोकल लोगों के टेस्ट के मुताबिक जो है वो हो रहा होगा, क्योंकि मेजोरिटी में वो होंगे। इसी तरह इंडिया से भी जो लोग जो है दूसरे कंट्रीज में शिफ्ट होते हैं, अगर वहाँ पे बहुत बड़ी इंडियन कम्युनिटी है तो चले वो आपको एक डिफरेंट जो है फूड देखने को मिलता है। वहाँ पे पाकिस्तानी और इंडियन सारे मिक्स हो जाते हैं। लेकिन जैसे अगर आप ऐसे कंट्री में जा रहे हैं जहाँ पर जो है वो नहीं इंडियंस या पाकिस्तानी इतनी तादाद में, फिर आप उन्हीं के टेस्ट के मुताबिक बनाओगे जो वहाँ पे रहते हैं। बिल्कुल। वैसे जो अरबिक फूड है मतलब वो भी टेस्टी होता है। लाइक अगर मतलब मुझे एक खाना तो बहुत पसंद है, मुझे बस खबसा अच्छा लगा था, और एक वो अलबेक जो है वो चिकन, वो जरा टेस्टी था। बाकी टेस्टी था। ओके, वो काफी बाकी वहाँ की बेस्किन रॉबिन्स अच्छी होती है, वो अरबिक फूड नहीं है। I mean, दो चीजें जो हम लोगों ने उस टाइम पर ट्राई की थी वो अच्छी थी। खैर यहाँ पर मैं बात करूंगी कि डिजर्ट मुझे काफी डिफरेंट लगा और काफी मजे का भी लग रहा था। मुझे लगता है कि मजे का होगा। यहाँ पर ना एक इस तरह से वो मिला करता था, शायद मतलब तुम्हें याद हो, केक रस टाइप कुछ इसी तरह का होता था, बड़ा सॉफ्ट सा और थोड़ा ऑयली सा भी होता था, और मजे का कोकोनट नहीं कोकोनट वाला नहीं होता था, वो इसी तरीके से स्क्वायर शेप में उसकी कटिंग होती थी, मुझे याद है, और बड़ा मजे का लगा। वो बबूसा पेस्ट्री की तो नहीं बात कर रही? पता नहीं, शायद मुझे वो केक एंड बेक से मिलती थी शायद, मेरा ख्याल है शायद। हाँ, तो कुछ इसी टाइप का मुझे वो पता नहीं, देखकर तो याद आ रही थी। लेकिन ये है कि
काफ़ी एक डिफरेंट मैं कहूँगी कि फूड सामने है। अच्छा मछली मैं बात करूँ ना, मैं सच में मुझे मछली इतनी पसंद ही नहीं है, लेकिन ये है कि अगर मछली इस तरह पूरी की पूरी मेरे सामने आ जाए ना तो फिर तो मैं नहीं खा सकती। मतलब पता नहीं, मुझे बहुत ही अजीब लगता है। मुझे ना मछली जो है ना वो जो बगैर कांटों के, जिसमें कांटा नहीं होता, वो पसंद है, वो भी ग्रिल्ड। तली हुई मछली मुझे भी नहीं पसंद। नहीं मतलब ये कि पूरी की पूरी मुंह के साथ आ जाए तो दूध के साथ बड़ा मुश्किल होता स्मेल है। मुझे भी आती है मछली में से ना, मछली से बड़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है। फिर प्रॉन्स हाँ अच्छे लगते हैं, हर किसी की अपनी अपनी चॉइस रहती है। वैसे मैं ये बात करूँगी और मछली भी कुछ लोग प्रॉन्स भी जो है ना वो भी डिपेंड करता है। एक जैसे वो फ्राइड प्रॉन्स होते हैं वो जो मिलते हैं, वो एक टेम्परा प्रॉन्स जो होते हैं। टेम्परा नहीं होते कौन से टेम्पुरा होते हैं कौन से होते हैं बता दें। मुझे खुद भूल गया। हेलो लेकिन टेम्परा नहीं होते। चलो जो भी होते हैं वो ऑरेंज कलर के होते हैं उनकी सॉस जो लगी होती है। नाम मुझे भूल गया। चले कोई बात नहीं, लेकिन वो होते वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। फिर उसके बाद जो डोसा था वो भाई एक यूनिक कॉम्बिनेशन था। मैंने वो तो बहुत यूनिक था यार उसमें। हाँ। चले आपने मटन लगाया, लेकिन उसके बाद अंडा भी जो है वो जिस तरह लगा रहे थे वो ये मटन वाला डोसा तुमने देखा पहले? नहीं, मैं कह रहा हूँ मटन लगाया लेकिन ऊपर अंडा भी तो लगा रहे हैं ना, तो वो पका रहे हैं ना। बट वैसे मैंने ये चीज़ देखी है, जब हम लोगों ने ट्रैवल किया था ना, तो जितने भी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स थे आपको वहाँ पर अच्छा खासा नॉनवेज जो है वो नज़र आता है, हर टाइप का। मतलब सी फूड में भी, चिकन में भी, मटन में भी। इवन के मैंने उस टाइम पर ये चीज़ नोट किया था कि लाइक मटन बिरयानी बहुत ज़्यादा वो लोग पसंद करते हैं। और उसके बाद लास्ट में हम लोगों ने बिरयानी देखी, तो बिरयानी हाँ मुझे बिरयानी पसंद है, चिकन बिरयानी जिस तरह से ये बनाई गई थी ऑलमोस्ट हम लोग भी इसी तरीके से बनाते हैं, बहुत टेस्टी बनती है बिरयानी। सो आई थिंक बिरयानी इस तरह वाला है कि ना बिरयानी बिरयानी बट्टों को प्यारी है बिरयानी। मतलब पाकिस्तान में मुझे ऐसे लगता है कि बिरयानी ऐसी चीज़ होती है कि जो हर घर में एक स्पेशल प्लेस रखती है। जब मैं टीनेज में थी तो मुझे ये होता था कि हर संडे के संडे क्योंकि हमें छुट्टी होती है तो बिरयानी बननी चाहिए, और मेरी अम्मी बनाया भी करती थी। मतलब संडे के संडे फिक्स होता था। और अभी तो हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक्स बड़ी कम कर दी हुई है, तब तो हम लोग हर संडे के संडे कोल्ड ड्रिंक, वैसे सैलेड भी बहुत भर भर के हम लोग खाते थे, बिरयानी ओह हो मज़ा आ जाया करता था। उस टाइम पे सारे बैठ कर इकट्ठे हम लोग खाए थे, याद है? तो वो एक अच्छी मेमोरी मुझे मतलब है बिरयानी की। सो अभी भी बिरयानी जब बनती है तो यही कोशिश होती है कि सारे जो है ना इकट्ठे बैठ कर खाएं। बाकी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा एक डिफरेंट फूड जो है वो लगा है। और जो हम लोग बात कर रहे थे कि नॉर्थ साइड का फूड और जो साउथ साइड का फूड है उसमें आपको वैरायटी कितना मतलब कौन डोमिनेट करता है ये पूछना चाहूँगी। वैसे मुझे उड़ीसा वाली साइड का फूड भी बहुत ज़्यादा वैरायटी में लगता है। लाइक वहाँ पर भी मुझे ऐसे लगता है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट आपको जो है ना वो मिलते हैं खाने में। बाकी हम लोगों की नॉलेज बहुत लिमिटेड है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ हमें इजाज़त मिलेगी। गुड बाय।